अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असफ़ान अली शेख है। हम यहाँ लिबास स्टूडियो पे हैं। हमारे ब्रांड पे जो होती हैं जो अनस्टिच कपड़ा भी आपको मिल सकता है, जेंट्स का सिलसिला भी सूट मिल सकता है। उसमें आपको चेक वाली शर्ट भी मिल सकती है, कैजुअल, जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्राउज़र, टी शर्ट्स, लेडीज़, जो भी ब्रांड में आपको अवेलेबल सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौर हाजिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और जिंदगी का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजर में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक ख्वाब सज गया है अब कि इस ब्लू इकॉनमी की सूरत में हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 1000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल खूबसूरत तरीन कोस्टल लाइन होगी, तो वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। बाकी दुनिया ये क्या कुछ कर चुकी है। इंशाअल्लाह अब जो ये सिलसिले का आगाज़ हुआ है, आगे इसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इस वक्त मैं कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ। ये जो आबदोज़ हम जिन्हें कहते हैं, ये जो बनाते हैं वो बड़ी लाजवाब किस्म की होती हैं और उसके बाद कोई हमारे मुल्क की जानिब झांक कर भी नहीं देख सकता। इस वक्त हसन आदिल साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर साहब हसन आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन आदिल साहब, पाइमिक की सूरत में जैसे मैंने एक बात कही कि ख्वाब बिल्कुल सज गया है कि जो कुछ हम नहीं कर सके ब्लू इकॉनमी से, जितना फ़ायदा नहीं उठा सके, इंशाल्लाह फ्यूचर में उठाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स देखी हैं और उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी देखी है कि व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। तो वी आर होपफुल कि हमारी कैपेबिलिटीज़ को देख के लोग हमारी तरफ आएंगे और इंशाल्लाह वी विल गेट ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड और एक्सपोर्ट की सूरत में इंशाल्लाह हम ब्लू इकॉनमी में और अपना जो भी इकॉनमी है हमारे मुल्क में उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। ये जो आबदोज़ कहलाती हैं, ये जितनी भी हमने बनाई हुई हैं, पानी के अंदर जाती हैं, हिफाजत करती हैं हमारी। हम इस वक्त दुनिया में कहाँ पर हैं? जो अगर मैं पाकिस्तान कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर लूँ, हसन साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौर हाजिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और जिंदगी का मसला है। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान। It's 6 p.m.
अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजर में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है पाए मैक पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक ख्वाब सज गया है अब कि इस ब्लू इकॉनमी की सूरत में हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 1000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल खूबसूरत तरीन कोस्टल लाइन होगी तो वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। बाकी दुनिया ये क्या कुछ कर चुकी है। इंशाअल्लाह अब जो ये सिलसिले का आगाज़ हुआ है आगे इसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इस वक्त मैं कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ। ये जो आबदोज़ हम जिन्हें कहते हैं, ये जो बनाते हैं वो बड़ी लाजवाब किस्म की होती हैं और उसके बाद कोई हमारे मुल्क की जानिब झांक कर भी नहीं देख सकता। इस वक्त हसन आदिल साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जो कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर साहब हसन आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन आदिल साहब, पाइमिक की सूरत में जैसे मैंने एक बात कही कि ख्वाब बिल्कुल सज गया है कि जो कुछ हम नहीं कर सके ब्लू इकॉनमी से, जितना फ़ायदा नहीं उठा सके, इंशाल्लाह फ्यूचर में उठाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स देखी हैं और उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी देखी है कि व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। तो वी आर होपफुल कि हमारी कैपेबिलिटीज़ को देख के लोग हमारी तरफ आएंगे और इंशाल्लाह वी विल गेट ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड और एक्सपोर्ट की सूरत में इंशाल्लाह हम ब्लू इकॉनमी में और अपना जो भी इकॉनमी है हमारे मुल्क में इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। ये जो हम ये जो आबदोज़ कहलाती हैं, ये जितनी भी हमने बनाई हुई हैं पानी के अंदर जाती हैं, हिफाजत करती हैं हमारी। हम इस वक्त दुनिया में कहाँ पर हैं? जो अगर मैं पाकिस्तान कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर लूँ हसन साहब, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में दुनिया में देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज़ जो कि आप दोस्त कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम एंड कराची शिपयार्ड हमारा वाहिद शिपयार्ड, इट इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल इनटू इट। तो ये जो पाइमिक की सूरत में 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ ने। तो लग रहा है कि कराची शिपयार्ड ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस करने वाली है इस पाइमिक में। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को करें, क्योंकि कराची शिपयार्ड जो है वो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज ऑफ़र करता है। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, जनरल इंजीनियरिंग, यानी कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर्स वगैरह, मतलब पीपल विल बी सरप्राइज टू नो कि अदर दैन शिप बिल्डिंग हमने अभी रिसेंटली जो हमारे गुद्दू बैराज है इसके गेट्स को भी रिफर्बिश करके दिया है और पाकिस्तान रेलवेज़ को हमने ओवरहेड क्रेन्स बना के दी हैं और कई शुगर प्लांट्स को हमने शुगर मिल रोलर दिए हैं। रिसेंटली हमने वियतनाम में और फ़िलीपींस में अपने शुगर मिल रोलर जो हैं वो एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो वी आर इनटू शिप बिल्डिंग, वी आर इनटू शिप रिपेयर, वी आर इनटू जनरल इंजीनियरिंग। इट्स अ वास्ट फील्ड और अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स और पाकिस्तान में ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना जो है वो हिस्सा इंशाल्लाह पूरा करेंगे। शिप बनाने में हमारी कितनी एक्सपर्टी है? क्योंकि एक लिमिटेड शिप हमारे PNSC के पास हैं, इसमें थोड़ी सी कमी लगती है। शिप बनाने में एज पर एक्सपर्टीज़ कंसर्न आई कैन अश्योर यू कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ काफ़ी खुल चुका है इस मामले में एंड वी कैन मेक ऑल द शिप। जितने भी शिप स्टॉल पे आप देख रहे हैं, जो मॉडल्स पड़े हुए हैं, दिस ऑल शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान और होपफुली नियर फ्यूचर में हम PNSC के साथ भी एक इंशाल्लाह हम वी विल डू द बिज़नेस और उन्हें हम जो है वो मर्चेंट शिपिंग में उसको बना के देंगे। अभी प्राइमरीली हमारा जो कस्टमर है डेफिनेटली डैट इज़ पाकिस्तान नेवी जो, और वॉरशिप मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी स्पेशलिटी है, लेकिन उसके अलावा वी कैन मेक अप टू 26,000 टन्स तक का हम कोई भी जहाज़, मर्चेंट शिप हो, पैसेंजर फेवरी हो, एवरी टाइप ऑफ शिप वी आर कैपेबल टू मेक। और इस चीज़ में जो है वो वी आर ऑन इट और इंशाल्लाह हम जो है आगे इसको भी लेके चलेंगे। मैं ओलंपिक्स कवर करने गया था एथेंस, यूनान, तो वहाँ पर क्वीन मैरी जहाज़ लगा हुआ था। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प वाक़या भी हुआ था वहाँ पे। मैं वीडियो बनाने के लिए गया तो हमें पकड़ लिया क्योंकि हमें नहीं पता था वो अंदर टोनी ब्लेयर ठहरे हुए थे, समंदर के अंदर ही आमिर खान जो बॉक्सर हैं हमारे, उनकी फ़ाइट देखने आए हुए थे। वो जहाज़ मैंने देखा। तो अभी आपने जितने टन की बात की है वो कितने टन का है? इससे कम ही होगा डेफिनेटली वो। तो उसमें यह है कि वो डिफरेंट किस्म के शिप्स हैं। तो हमारे यहाँ मेन मसला ये है कि मैरी टाइम अवेयरनेस, जो मैं कहूँगा मतलब पिछले 75 ईयर्स में शायद उस तरीके से हमने वो मैरी टाइम अवेयरनेस नहीं है। वी आर नॉट अ मैरी टाइम नेशन, मतलब लैंड ओरिएंटेड है हम ज़्यादा, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा लोग उस तरफ आए नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक फील्ड है विच इज़ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है
और इसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मतलब जो भी अनफॉर्चुनेटली जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें नीड हम के इस किस्म के वेंचर्स में हम एक्सप्लोर करें और वेंचर करें, तो ही हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। और मेरा ख्याल है दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट फील्ड, और इंशाल्लाह शिप यार्ड इज़ देयर, वी आर रेडी फॉर इट, और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि ये चीज़ें चलें। सर आदिल साहब, थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताएंगे ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस हो कि हम क्या कुछ बना रहे हैं और कितना ज़बरदस्त हम आगे आ चुके हैं। जी हसन साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये मॉडल है जिना क्लास फ्रिगेट का। ये पहला फ्रिगेट साइज शिप है जो पाकिस्तान में ही डिज़ाइन हो रहा है और यहीं पर मैन्युफैक्चर होगा। इसकी डिज़ाइनिंग इन प्रोग्रेस है और इंशाल्लाह अगले साल से हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला शिप होगा जो कि डिज़ाइन भी यहाँ पर हुआ और कंस्ट्रक्शन भी इसकी यहाँ पाकिस्तान में होगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो हमने शिप का जो मॉडल सा बनाया हुआ है, बेसिकली जिना क्लास के ब्रिज को ही हमने यहाँ दुनिया को दिखा दे अपना हुनर, कुछ बांध कमर कोई ना हो डर। यह टैप बॉल का जोश और जुनून, जो होगा वतन में अब घर घर। हर कदम पुरजोर हो, तेरे नाम का ही शोर हो। जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले। जीत ले, दिल जीत ले, दिल जीत ले, दिल जीत ले। चांद सीने पर सजा और सितारा दिल से लगा। गेम तू अपना उठा, जीत का नारा लगा। हर कदम पुरजोर हो, तेरे नाम का ही शोर हो। जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले। ललकार से, रफ्तार से, हर बार से, ये ललकार से, ललकार से, रफ्तार से, हर बार से, ये ललकार से। दिल जीत ले, दिल जीत ले, दिल जीत ले, दिल जीत ले, दिल जीत ले। ललकार से, दिल जीत ले, रफ्तार से, दिल जीत ले, हर बार से, दिल जीत ले। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you folks wherever you are across the globe. We are here for another exciting match, match 14, where Gulshan Gohars are taking on North Nawabs. We welcome you all the way from DHA Sports Club Moin Khan Cricket Academy, and another thrilling contest we're going to witness. Earlier on, our presenter Danish Anis was there. As you see, both of the umpires making their way to the middle at the toss, and the news from the center was that the captain Bahadur Ali of Gulshan Gohars has won the toss and decided to bat first. There you see on your screen Danish Hussain alongside Sibtain Raza. The two umpires will be officiating this contest. North Nawabs have just won one game, whereas Gulshan Gohars have just lost one game. So amazing bit of versatility in both of the sides.
and we are hoping for another exciting game of cricket. And with me is Kainat Imtiaz. Hello and good evening, Kainat. Good evening. The batters are all set and going on to the field to set a good target for North Nawabs. Let the game begin. Hoping for an exciting game. Have a look at the two sides. TM and Bahadur Ali will be the players to watch out for Gulshan Gohars, but we have witnessed yesterday night even Mazula and Alias Jani can hold the bat against Malangs. We saw them, and Shafi Agha for North Nawabs will be the key. Hafiz Pola, AB Paro obviously, and with the ball Mursalim and Zohaibur Rahman. Of course, Sahram Kaka, the left-arm pacer, and Asif Pathan will join in with the ball. So it's going to be an interesting game of cricket. As we see, they have made a change in the batting order, have Gulshan Gohars. Looks as if it's going to be the captain himself, as usually, and alongside with him, there you see, Bahadur Ali, the left-handed batter. He's in good touch of late. Hassan Chitta, surprisingly, will be opening the batting instead of Taimur Mirza. What should be the chemistry in this change of order, Kainat? What do you make of it? Well, maybe they want to give chance to everybody before getting into all those last games where it is the decider and everybody should get a chance to bat before those main games. So yes, round matches are important, but again, they're quite confident, and Taimur has been quite impressive with the bat. So it's a good thing to give chance to other batsmen as well. Asif Pathan, the right-arm fast bowler, will take the attack. Very talented fast bowler. Comes all the way from KPK. Here we go. Let's play, boys. And let's play, says Hassan Chitta. It's a scar. It's high in the air and it's going to travel towards the boundary. Has that catch been taken? Yes, it has. Would you believe that is a best running catch? And guess what? It's Sahram Kaka, the left-arm pacer. Well, what a catch. And what entertainment already. Well, yes, running backwards, and this is one of the best catches, I think, of the tournament. And again, it's always it's really hard to run backwards and get those catches because your eye is not on the level of the ball. And an outstanding catch by the fielder. Well, that has to be the catch. One of the catches of the tournament. Very good running effort by Sahram Kaka, the left-arm pacer. Hassan Chitta has just come and gone. First ball, a golden duck for him. You're not for one. Well, we should definitely see that catch again, as it was exceptional effort by the fielder. And just as it said, you just need to try and you'll get all those catches. He's covered a good bit of territory on that occasion, did Sahram Kaka. He's a good athlete. Comes all the way from Laya. Pretty young, just 26 years of age. And very fit enough as well. And took a very good catch. In the night sky, never easy. Have a look at that again. It was miles in the air. And he had to run to get to the ball. Look at that. And he had to keep that boundary in his mind as well. Just stopped himself inside the boundary. Brilliant effort. Well, he couldn't believe himself, and neither can the team. Taimur Mirza for Gulshan Gohars again on strike. Goes down the ground, absolutely spanking straight drive to get off the mark. TM in the house. That really was a powerful hit. Didn't get the elevation, but he really has hammered that away down the ground. He was completely ready for the shot. And again, in a smashing shot straight towards bowler. Again, nobody was able to do a lot, as it was so striking fast.
Don't get in the line of that one. That is like a rocket to the boundaries. He's dealing in boundaries. He's known for his six-hitting power, but this time he's just hammering and hammering big time. Well, I think he has read the bowler very nicely, as Asif is quite an exceptional bowler and he has the capabilities to get Taimur out as well. And again, lightning shot by Taimur Mirza. The fielder was not able to get to that ball. Tell you what, he's just showing his class, what he can do with this type ball. He's not only a six-hitter, he's a good striker. Full toss! Has he knocked him over? I think he has! Unbelievable! For the second time in this tournament, it's Asif Pathan who really draws the blood, which was absolutely unbelievable. It's TM. What is going on in this first over? So much in just 4 deliveries already. I can't believe it that it's 2 wickets down and Taimur Mirza is back in the pavilion. Well, all credit to the bowler. He's bowled a slow yorker and hit the base of the off stump. Great delivery to get somebody like Taimur Mirza. He has hit a couple of boundaries, but he's out now for 8. Well, that was the previous batter, Hassan Chitta, who went without scoring, but TM has made 8 runs. So they're 8 for 2. It's all happening here. Taimur Mirza completely missed the line of that ball. And again, it was a very rightly placed delivery by the bowler, Asif. He has been exceptional throughout the tournament so far. Well, Karnath, I'll tell you one thing. You just can't ask for a better start if you are a bowling captain. You know, his captain, Shafi Agha, will be very happy, more than happy with his bowler, Asif Pathan. He's very talented, as I mentioned before. And he's got 2 wickets very early in the pace. So it's a must-win game for North Nawabs. And he's making his presence felt here. Is the bowler Asif Pathan. And that has brought Alias Johnny to the wicket at number 4. Looked in good touch yesternight. Oh, look at that. Went for a forward defensive stroke. They're gone for the appeal, but I think the bat hit the ground. That's why there was a little bit of sound. And have a look at that spectator. He's always there, chirping and chanting his boys. He's their big supporter. You always need supporters, and of course North Nawab has quite few. Well, the ball was going away from the batter, and he just was putting that hard hit. Nicely ball. Have a look at that. Change in length on that occasion and cramping the batter for space. What an eventful first over from Asif Pathan comes to an end. It's after 1 over, 8 for 2. All right, what an action we have seen already in the first over. Asif Pathan has picked up 2 scalps. Hassan Chitta and Taimur Mirza has been picked up very early. So it's all responsibility on this pair now. The captain, left-hander Bahadur Ali. With him is Alias, who is also in good form. But he needs to make use of that form because his team needs it, and very desperately at the moment. What a start for North Nawabs. Mind you, they've lost a couple of matches on the bounce, have North Nawabs. Won their first encounter in this competition. And they need this victory very desperately. And they're making it happening for their side at the moment. Arshad Afridi, one of the successful bowlers in the game when they won the match. Actually, they defended 70 runs in that game when they won. He took 4 wickets, did Arshad. And he will be up against the left-handed Bahadur lefty. Down the leg side. Very hard to bowl to a left-hander from that angle. Missing his line there. Well, surely is, but it's also a difficult angle for the batter as well. And if you see, Bahadur has a lot of responsibility today as he needs to get his team to a good total in the first innings. And especially when they have lost 2 big guns in Hassan Chitta and TM, you know, it's not going to be that easy.
Oh, have a look at that for a stroke. Banking on his authority, banking on his power, and hitting it over back with a point. Would you believe that? Has that carried all the way? Umpire's not sure, but that really has been some shot. Well, Irshad is giving some bad deliveries to the batter, and it was a good shot. And I think it might be 6. Well, it's a tough one for the third umpire, I can tell you. Pretty close to the boundary. And it's a boundary. Just bounced before the skirtings. It was a very good shot. Gee, this guy can play. Seen him playing cricket ball as well, and that was a clear evidence that he can hold the bat. Nicely bowled. Good comeback delivery by Rashad Afridi. You got to bowl there in the block hole. Well, very full, very, very straight. And in just the area the bat was landing. So yes, it was a good delivery. And especially in tape ball, if it's a dot delivery, it's always a good ball. Well, I've been hearing from the experts of cricket over the number of years that don't give width to the left-handers. Left-handers do like width. You talk about greats like Sana Jayasuriya's, Adam Gilchrist, Bahadur lefties. If you give them width, this is what they will do to you. Through extra cover, a sizzling cover drive for 4. Let me make some marks here. As if you give the lefty some kind of width and that area, they're going to extend their arms so easily and so beautifully that that ball definitely will go to the boundary. And they have a good angles of the gaps as well. Very elegant on the eyes. He had all the poise in that stroke. He has creamed that away, and this is going to carry all the way. Another 6 for Bahadur lefty. He's there, and he's there for some business. Not a good line for Bahadur. I don't think this was the line North Nawabs were expecting, and especially the length, because if you give that ball to Bahadur, he is going to get that out of the park. Gee, that's a great anticipation from the Bahadur lefty, the left-hander. Previous delivery was full, the ball before, and looks as if he was waiting for that length. He was ready for that pull shot. Good bit of comeback, almost a Yorker, and they're going for the appeal, and I think they got their man. Would you believe that? It's all happening. We've seen boundaries, we've seen 6s, and in between, the wickets are falling too. It's the third one, and we are only to the second over of the innings. What a casual play by Bahadur. I was not expecting a very casual shot by such a good batsman. I'll tell you what, Conrad, for a second I thought that was a bomb ball. But it was a catch and gleefully accepted by the fielder at mid-off. Bahadur Ali has made 14 and they are in deep, deep trouble. 3 wickets down already. Rashad Afridi is one of the wicket takers for North Nawabs. We have seen him in the previous matches too, and here he's proving a point. After being slammed, Anis Lefty has made his way to the centre with his side in dire stress. He's got a huge responsibility on his shoulders, the left-hander replacing his captain. Left-hander replacing another left-hander. Oh, full toss. This is what it can happen to you when you are under pressure. Even a full toss can be gotten for just only 1 run. So that ends the over with that single. 2 done. It's 25 for 3. Captain removing that last over. And here are the points table. Malir Malang's leading the table with 8 points. Gulshan Gohars at number
2 with 6 points, Clifton Populars with 4, DHA The Bungs with 4, Liari Legends with 2 points, North Nawabs with 2 points, and yet to get points, the bottom on the table, Johor Jawans and Karachi Knights. Amazing standings those. Still time to go in this tournament, Kainat. I'm sure a few of the teams will definitely make a comeback as we see North Nawabs going good in this match. Well, we'll have to see till the last round games who tops the table and who won't be going to the semi-finals. But yes, they all still have chance to get on the top. Asif Patan will continue. Bowled a brilliant first over, went for 8 runs when he was driven down the ground a couple of times by Taimur Mirza. But he's picked up 2 big wickets of Hasan Chitta and Tiem. Seems to be in very good form. If my memory serves me right, I get the feeling that he's gotten Tiem in one of the games before as well, has Asif Patan. He had knocked him over with a Yorker that time around. This time he goes for a big heave, didn't entirely connect out of the screws. There is a protection at Kalkona, so that single brings Alias on strike, who's yet to get off the mark. Two new batters on crease. It's always a pressure when there are 2 new batters, and especially when 3 of the main batters are already out. This game is on for North Nawab. Well, no matter you're playing tape ball or cricket ball, you don't really want as a batting unit 2 new batters at the crease. And this is what unfortunately at the moment is happening to Gulshan Goers. They are one of the biggest sides in this competition. There's no question about that. But here under the pump with the start of the proceedings. Drilled and drilled powerfully through extra cover for 4. They need more of these. Alias gets off the mark with a beautiful boundary. An excellent shot over the cover. He played quite straight, and that was the reason he got that shot, right? It's important to play straight on Asif as he's moving the ball away from the batter. Yeah, seems to have just opened the face of the blade at the last minute, but his body was right behind that. Transferring his body weight to the shot. Good technique. This time, back of length delivery. Didn't entirely got hold of that one. A dot delivery. Good thing about Asif, he keeps on changing the length of the ball and the pace as well. Sometimes it's a Yorker, sometimes it's a back of length, and sometimes it can be very full of a delivery. So that's what keeping him safe from all the runs. Oh, nicely bowled again. Good delivery. This is what he's known for, and this is what he's doing regularly. He's keeping the batters guessing all the time. He's not predictable, he's Asif Patan. And you have to be very watchful to face this type of bowler. For those who have just joined us now, Gulshan Goers have won the toss and opted to bat first and lost wickets in clumps. 3 of them so far, and we are only into the 3rd over. Big guns so far couldn't fire. Hasan Chitta, TM. Oh, goes through the offside, thick outside edge. Will give him at least a couple. Fielder's given the chase and done a good job to stop the ball. So it's good going for North Nawabs, Kainat. They have really kept things under control to this point. This is what they were looking for. This kind of start they needed. Asif has been bowling exceptionally well throughout the tournament. So yes, but they still have 3 overs remaining and they do have 7 batters left. So there's still a chance some new star to be made in this match. He goes through the covers. It's a very good looking cover drive. Oh, look at that. He slipped in the way through, did the fielder. But he's done well to recover and limit the batters to only a couple. Have a look at that again. This is how he slipped.
Well, again, a casual approach. He was not really his eyes were not on the ball. And Johar Jawan's at 34 for 3. So with that, we have a change in the commentary box. And it's going to be Farooq Riaz to take you through with Zishan Khalid. Thank you very much, Kainat and Falak Sher. It's a quiet start from Gulshan Kohar. Just 34 on the board after 3 overs. They lost 3 crucial wickets. It is quite uncharacteristic as far as their reputation is concerned. Asif has been a pick of the bowler. 2 for 17 to his name. And at the com box, I have been joined by Zishan Khalid. Welcome. Thank you so much, Farooq. Saifullah is going to be the new bowler in, starting the 4th over of the innings of Gulshan Kohar. Yeah, once again, they have not gone off to a good start. Gulshan Kohar. Similar thing happened last night as well when they were playing against Maleem Malangs, and top 3 batters were back in the dugout very early. Swing and a miss. He's playing his first game on ease. He'll get some time to get adjusted to the conditions in this DHA Sports Club Moin Khan Academy. Just trying to heave towards the onside. I've seen so many players try to heave just blindly, and most of the time they don't get any connection. So angle working quite perfectly. Right arm over the wicket to the left-hander. Another swing and a miss. Almost a carbon copy of what happened in the previous ball. And you can clearly see some nerves in the batting order of Gulshan Kohar. Seems like they haven't recovered from the defeat last night against Maleem Malangs. That's true. And Anis is having a word. Has got a piece of advice from Ilyas. He's not reading the pace, not reading the release of the ball. And that is why he was clearly late on both occasions. A slower one. He's clearly struggling here so far, and he's once again trying to hit that on the leg side. Ball just hitting his body. They're going to collect a leg bye in the end. I was really surprised that Raza wasn't sent up the order. Ilyas and Raza set up a very good partnership last night against Maleem Malangs when they once again lost 3 wickets very early. They still managed to score over 100 in their first 6 overs. The wicketkeeper was looking to get the batter out. It was miles away from the stumps. There was half an opportunity here, but it's still a good over. They will be very pleased the way this over is going on. Anis is really strong, and once again he missed the contact. Got a leg by though. A young fan enjoying a hot cup of tea out here at DHA Sports Club. Low full toss, hit away on the offside. It's into the gap. No field at a deep square leg. One bounce and into the fence. Well, we have seen quite a few of those from Ilyas so far in this tournament. He has been by far the pick of the batter, especially when they are looking to play it on the offside. Welcome boundary here for Gulshan Kohar. Low full toss outside the off stump. The right-hander came to the crease and he just could not maintain the right line and length. Nicely put away. A perfectly safe shot, one bounce and it went over the fence. Well, he hasn't had much chances to bat in this tournament, Ilyas. Picked away on the leg side. It's up in the air. It's into the gap. It's going to run away for yet another boundary. The dot ball percentage has been very low, especially when it comes to Ilyas, especially because he's playing the ball on its merit. Whenever the ball has been pitched outside the off stump, he has looked to play it over extra cover, and now playing it comfortably past that fielder at square leg. Lovely shot. Far better shot on this occasion. Flicked away in style. Although he got a boundary, but it was quite stylishly done. So he lost the line as soon as the right-hander has come to the crease. And now he's leading this partnership. 16 for Ilyas. And it's very important for Ilyas to keep the strike as much as possible. Well, so far in this innings of Gulshan Kohar, they have collected more boundaries than maximum. It's a testament to the fact that not Nawabs have bowled really well so far. We saw TM getting 2 boundaries, then getting dismissed. Even Bahadur Lefty got 2 boundaries before he was dismissed. Shot, picked up, it's up in the air. And it has been taken, but in the crowd. 2 boundaries and now a maximum to Ilyas. What a way to finish the over. 2 boundaries and a 6 here. Slow one, nicely picked. He read the release of the ball very well and he pulled it quite comfortably. He was very watchful indeed and generated a lot of force. A good catch, but beyond the boundary. Lovely finish of the over. 49 for 3 on the board.
49 for 3. Ilyas is doing a good job here for Gulshan Gohar. He needs some support here from the other end where Anis, who hasn't got going. 2 boundaries and a 6 in the last 3 balls in the previous over. Yeah, he was not available in the first 3 games. In fact, first 4 games, Gulshan Gohar, as soon as he made himself available, he was straight away inducted in the playing 11 Anis. That shows that the dugout, the management and the captain have lots of trust in him. So far, he has not been able to middle any ball, Anis, but you can expect him to fire. Meanwhile, it's Sehram who is going to bowl the 5th over of the innings. He took a really good catch to get rid of Ehsan Chitta, who's having a dreadful time in this UBL, KTPL Season 3. And he's once again got a piece of advice from Ilyas. It's important, just tap the ball, pick up 1 here. Slower one. Once again, nicely disguised. So far, he has no answer to a wonderful piece of bowling from North Nawabs. Previously, he was missing the ball outside the off stump. This time, it gets a little easier, especially when the left-hander is facing a left-arm seamer. But since the ball was pitched outside the off stump and it was much slower through the air as well, just couldn't time it properly. Frustration here for Anis and also for Ilyas. They can't afford to consume so many dot balls here. These dot balls are so important. He has to find the middle of the bat here. Length delivery, this time driven straight down the ground, but there is a fielder out there at long off. 50 also comes up for Gulshan Gohar in the 5th over of the innings. Well, I think there is no harm if you just tap the ball and pick up 1. He smashed the ball to pick up 1 here. So it won't be a bad idea. And it won't be unacceptable in tape ball cricket if you tap the ball deliberately just to pick up 1. It's a tape ball cricket. It doesn't mean that you can't play with soft hands. So the partner is striking very well, Ilyas. So it will be a good idea just to rotate the strike and give him a strike as quickly as possible here. Yeah, he can easily learn from someone like Ilyas, who is batting at the other end, because Ilyas so far has not just looked to swing everything down the leg side. We have seen him playing few cover drives. We've seen him collecting few boundaries over extra cover as well. Sehram is going to once again come over the wicket. Slower delivery, just managing to hit it towards square leg. Running the first one hard. It was Anis who wanted to come for the second one, but Ilyas denied his partner. Good to see the bowlers have developed slower ones very well, and they are using it for great effect. Not only to pick up wickets, but also to stop the flow of runs. And that was one of the examples. The batsman changed his mind in the end. He had to just tap and pick up 1. So the Anis, who is really struggling, 2 of 7, has got the strike back. Moments ago, you could see Ehsan Chitta in the dugout. Usually he's a very smiley person, very chirpy, but was sitting a little silent tonight. Low full toss, once again not connecting it well enough. It's going to be just 1 more towards long on. Well, they shuffled their batting order tonight, Gulshan Gohar. It was Taimur Mirza and Bahadur Lefty who were opening the batting regularly in the first 4 games. Tonight, Taimur Mirza came out to bat at number 3. Ehsan Chitta faced the first ball. And I think he did nothing wrong. He played a wonderful shot over mid-off, but just not having his luck. Mid-off was running backwards, took a really good catch over his shoulders. Absolutely. Everyone was surprised at the way the catch was taken. He kept running back and kept his eye on the ball in the end. A very good grab indeed. Has got a feel for Ehsan Chitta. He was certainly not a lucky fellow today. Picked up on the leg side. It's up in the air. A fielder is getting underneath that and he takes it. It's a really good catch. He timed it well enough, just couldn't get the distance behind it. And it's Ilyas who's going to walk back now. Good catch by Hafiz bowler. He was placed strategically for this kind of shot. And lovely pickup shot, but it wasn't long enough. Hafiz bowler did really well. Timed his jump beautifully. He was cool as a cucumber. And a fine innings has come to a close. It's a big setback towards the end of the innings for Gulshan Gohar. 23 of 12. 52 for 4 on the board. Well, so far so good from Sehram. Just 3 runs conceded in his opening over. Has got a big wicket of Ilyas as well. And tell you what, he was the one who took the catch of Ehsan Chitta, running backwards at mid-off. So he's having an excellent night so far. And you could see some tense faces in the dugout of Gulshan Gohar. Raza Chandio has come out to bat at number 6.
I was expecting him to be promoted up the order because of the way he batted last night against Maleen Malangs. But he still has 7 balls remaining in the innings to create some sort of an impact. This doesn't look like a good score for Gulshan Gohars up till now. Full toss, hit away fine, but there is a failure at short fine. Zain Pathan is going to cut that one off. A single to get off the mark with. Just 4 runs and a wicket in that opening over of Severam. Brilliant stats. 5 done. It's 53 for 4. Well, no surprises. Maleen Malangs leading the points table with 4 wins out of 4. Gulshan Gohars are at number 2. Clifton Poplar have been playing some really good cricket. Look at their net run rate. They have got 2 victories as well. So has DHA. The Bangliari Legends got their first victory last night against George Javans. North Nawabs have also got a victory each. But George Javans and Karachi Knights are yet to open their account. George Javans fought really well last night, but they just could not finish. They were just 9 runs short in the end. They had some moments, but they haven't got kind of form that win matches for their side. So frustration for George Javans fans. They are at the bottom. The Karachi Knights also struggling. Maleen Malangs, the side is was really dominating, and also Clifton Poplar, although they lost 1 match, but they have shown real firepower in the batting. Last over is about to begin. Yeah, even I thought George Javans had a wonderful opportunity of winning the game last night because, yes, they conceded a lead of 20 runs in the first innings, but still, it was a huge target. They were chasing 124 and they just fell short by 9. That's because of the wickets that they lost towards the middle stages of the innings, that too in clusters. Irshad is going to start the last over. Picked up straight. He hits it hard, he hits it flat, and that has been taken. Catching has been brilliant so far tonight by North Nawabs. It's another spectacular catch. It's Hafiz bowler once again. What an outstanding take. He kept running towards his right, kept his eye on the ball, and what a grab in the end. Very good strike indeed. Hard and flat, and terrific take. My word, one of the best catches of the competition. Well, he's going to have to depart very early tonight. Raza Chandia walking back after scoring just 1. It's 53 for 5. 53 for 5, Gulshan Gohar, and half of the side is gone. And Shiraz Ali is the next man in. The left-hand batter. He is ready now to face the music. 5 balls to go to conclude this innings. Yeah, a few hours ago he was out with a clear message when Anis was struggling earlier on in his innings. Now he has come out to bat himself. Probably it's the first time in the tournament that Gulshan Gohars have lost 5 wickets in an innings. It's the first time their top order couldn't fire, and now they are struggling. Good ball, really good ball. He's really quick through the air, Irshad. He's got that slingy action which makes it even more difficult for the batters to pick up the length and the line of the ball. Leg by signal by the on-field umpire. Certainly, a teasing angle from the left armour. Came round the wicket, slingy action, fast, and targeted the base of the leg stump. That made it even more difficult. And batsman got beaten clearly by pace. He cleared his front leg. He showed some intention to heave it towards the onside. In the end, just 1. So both these batters, both these left-handers, it's the first time they're batting in this tournament. And that too in the last over of the innings. Down the leg side, it's going to be a wide, and they scampered their way through that single. So add 3 more to the total. He tried to repeat a similar ball, but on that occasion, he misdirected it completely, and the keeper made a fumble. So a single taken here, but these runs won't hurt as much because the score is below 60, and that is surprising for us. No one, I think, predicted from Gulshan Gohar to score around 60 in limited 6 overs. Still, 4 balls to go. Where will they finish? Gulshan Gohars are sitting at the 2nd position in the points table with 3 wins. That is solely because of their batting. It's up in the air.
Tell you what, he has timed it very well, all right. That has gone way back into the stands. That is some strike. That is quite brutal. Right off the middle. Absolutely smashed. Just a fraction short. And an incredibly good shot that is. Into the stands. Damaging sixes for Gulshan Gohar here, and some mini conferences going on with the bowler. Yeah, just missed out his length by a few inches there, Rashad. Apart from that, he has been simply outstanding tonight. 2 for 25 halfway through their second over. Any captain would take it. Shiraz still have 3 balls remaining. They can still go past 75. Hitting it all across the turf. It's into the gap. There is a fielder at deep mid-wicket who is running towards the ball. There might be a chance of a run out. The bowler misses and they complete 2 runs. These are important runs here. They're trying their hard to get maximum number of runs. But still not a kind of connection he was looking for. There's a side-on angle. And that is how the second run was completed. You can see they made a fumble here. It was a clear chance. Batsman was not even in the frame. So the bowler just lost his concentration. Yeah, by the time the fielder threw the ball, the batters did not even leave their crease. Once again hitting the body. They're going to just collect 1 leg by. In fact, he's looking to come back for the second run. Now it's going to be a run out at the wicket-keeper's end. It's all happening out here. What's going on is hard to understand. I think the third umpire has been called for it, and they are running everywhere. The running has been at 6s and 7s. That was S. and Chitta who wanted to be on strike for the last ball. The wicket-keeper, he knew that it was S. and Chitta who needs to get run out. And I think he's clearly short of the crease. So good thinking just from the wicket-keeper. He knew Anis was struggling. Shiraz Ali, there you see walking back after scoring just 9. It's all 6s. It's 66 for 6. Lots of confusion. The last ball, the run out happened, and now the final ball is about to begin here for this innings. Hassan Lefty, the new batter in on strike. He got a run out at the wicket keeper's end on the last ball. And Anis was, in fact, the other batter was run out. So Hassan is going to be facing the last ball of the innings. He has picked up in the air. And tell you what, he has got that just over that fielder at mid-wicket. It was Mursalim who was sitting underneath that. Couldn't complete that catch. We'll have to check the replay to find out whether the ball landed beyond the boundary ropes or before that. I think it's a maximum. It's a valuable 6. Such a precious 6 for Gulshan Gohar. He gave us everything. He got the hide. And I think the fielder had a chance. And he not only dropped the catch, but also the ball landed beyond the boundary. So this 6 maybe can create a difference in the end. Look at the shot. He wasn't the best position. And where the ball actually landed, we can't tell from here. The fielder is the best judge. The boundary signal by one of the officials here. Be it a boundary or a maximum, I still believe North Nawabs are going to take it. They have done really well to restrict an opposition like Gulshan Gohar's under 75. Especially when you consider the fact that they have got the likes of Taimur Mirza, Bahadur Lefty, Anis and Chitta in their lineup. Let's have a look at that replay again. He clearly got his hands to it. Just need to confirm whether the ball hit boundary skirtings on the full or did it land before it. Even the fielder was looking at the ball, so he might have not seen where the ball landed actually. I think that guy in the jacket, I think he was in perfect position to judge. And he clearly signaled a boundary here. So we can trust this guy to make this decision. So we don't have a perfect angle for it. So at least a boundary to the total. Yeah, if it's a boundary, that means Gulshan Gohars are going to finish off with 70 for the loss of 6 wickets. If it's a maximum, then means it's going to be 72. But nevertheless, it's North Nawabs who are going to take it. They have bowled exceptionally well.
That has been a boundary signaled by one of the on-field umpires. So Gulshan Gohars are going to finish off their innings on 70 for the loss of 6 wickets. I think North Nawabs are going to take it. They bowl exceptionally well. Not only the bowlers, but the fielders have responded equally as well. We have seen some really good catches being taken by S. Pola as well as by Sehram, especially the one which he took by running backwards from mid-off to get rid of someone like S. and Chitta. That's the first ball of the innings. S. and Chitta did no wrong. Was looking to clear the fielder at mid-off, but look at that catch taken by Sehram, running backwards over his shoulders. That was an outstanding take. Taimur Mirza came in, struck 2 boundaries in the opening over before he was dismissed as well. He was fairly bowled. The off stump went for a talk. Bahadur lefty also struck 2 boundaries and a maximum in that over before he was dismissed as well. A soft dismissal. Once again, it was Asif Pathan into the action, taking a catch at mid-off. Ilyas tried to consolidate the innings, striking few boundaries. Anis was sent up the order tonight. He was clearly struggling. It was his first. Ilyas struck a cameo of 23 of 12 before even he was dismissed. Once again, a very good catch taken by the fielder at deep square leg over his head. And even after that, they just couldn't really recover. Raza was sent in. Another very good catch taken by the fielder at long off. Anis was clearly struggling. Shiraz got a boundary, in fact got a maximum before he was dismissed, courtesy of a run out. They managed to get 2 run outs in that last over. Sohail lefty struck a boundary of the last ball, but that was not enough. Gulshan Gohars finished off their innings on 70 for 6. Brilliant bowling effort. S. and Chitta walking back without troubling the scorer. Bahadur lefty could only score 14. Ilyas was the leading run scorer with 23 of 12. And Taimur Mirza once again couldn't fire tonight for Gulshan Gohars. Asif Pathan was simply sensational with the new ball, picking up 2 wickets, went for just 17. Irshad also picked up 2 wickets, and Sehram just bowled 1 solitary over where he gave away just 4 runs and picked up a wicket. So North Nawaz, and they will be come out to bat in the second innings, will be trailing by 70 runs. Time for a change in the commentary box. It's going to be the darling of the crowd, Danish Anis, alongside Naseem Rajput. Thank you, Zishan Khalid and Farooq Riaz. आज बॉलिंग के दौरान शानदार डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है नॉर्थ नवाब्स ने और इनके तमाम ही बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया. ना सिर्फ ये बल्कि कमाल फील्डिंग देखने को मिली आज नॉर्थ नवाब्स की जानिब से. 2 कैचेस डीप में लिए गए बाउंड्री लाइन के पास और दोनों ही बड़े तगड़े थे. बिल्कुल, नॉर्थ नवाब इस मैच में बहुत ही मुख्तलिफ दिखाई दी. और इवन मैं अगर बात कर लेता हूँ गुलशन गौहर्स की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी टीम है. ये हाफिज पोला स्क्रीन पर दिखाई दी और उनके साथ शफी आगा टीम कैप्टन नॉर्थ नवाब के लिए इनिंग का आगाज़ करेंगे. गुलशन गौहर्स जिस तरह की उनकी बैटिंग है, तैमूर मिर्ज़ा, बहादुर, एहसन चिट्टा और ये माज़ुल्ला बॉलिंग का आगाज़ कर रहे हैं गुलशन गौहर की जानिब से. ये पिछला मैच लूज़ कर गए अगेंस्ट मलीर मलंग और तकरीबन सिमिलर परफॉर्मेंस दानिश हमने इस मैच में भी देखी इनकी. एक जैसे मसाइल नजर आए कल रात के मैच में और आज के मैच में. टॉप 3 जल्दी वापस पवेलियन लौटे और उसके बाद आपने देखा मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आया. माजुल्ला इनिंग्स का आगाज करते हुए ऑन साइड के जा रहे हैं. हाफिज पोला का स्ट्रोक, गेंद गई बाउंड्री के बाहर. बाउंड्री के साथ आगाज किया यहाँ नॉर्थ नवाब ने. चौके लगाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं हाफिज पोला के लिए. छक्का लगाकर अपने रवायती अंदाज में बैट पटकते हैं. लेग स्टंप की जाने बॉल थी और ज्यादा करना नहीं पड़ा यहां पर हाफिज पोला को. अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग की जानिब. 4 रन हासिल किए यहाँ हाफिज पोला ने. बहुत ज्यादा बोर्ड पर रन्स नहीं है. अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी माज एंड गुलशन गौहर के दीगर बॉलर्स को. यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग. इस बार बड़ी हिट हाफिज पोला ने गेंद को पहुंचाया. स्क्रीन पर जाके गेंद लगी. शानदार छक्का. एक ही ढाई से हाफिज पोला की बैट स्पीड इतनी है कि नजर ही नहीं आता बल्ला घूमता हुआ. रिप्ले में आप देखें तो समझ में आता है. ठीक है जी स्क्वायर लेग की जानिब शॉट खेला है. कमाल बैट स्पीड.
नाम के पोले शॉट में कोई पोलापन नहीं होता, पूरे स्ट्रोक लगाते हैं हाफिज पोला। जब भी स्ट्रोक लगाते हैं बहुत ही दबंग किस्म के बैटर हैं ये। एक नाम है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में हाफिज पोला का। जिस तरह तैमूर मिर्ज़ा की बात की जाती है, खुर्रम चकवाल की बात की जाती है, असद शाह की बात की जाती है, फाद मियाँ चुन्नू की बात की जाती है, वहीं हाफिज पोला भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। क्रेडिट तो जाता है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के या मैनेजमेंट को कि पाकिस्तान भर से टैलेंट को जमा किया है और बड़ी मोहब्बत के साथ टैलेंट को जमा किया है और फिर तमाम टीमों ने लड़कर उस टैलेंट को ड्राफ्ट भी किया है। नसीम राजपूत 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होती हुई जरूर गई और अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। इस तरह 2 रन मजीद हासिल हुए। यहाँ नॉर्थ नवाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दानिश, क्योंकि इससे पहले वो मैचेस लूज कर गए और ये शायकीन क्रिकेट DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को एंजॉय करता हुआ। नॉर्थ नवाब का चौथा मैच है ये। इससे पहले 3 मैचेस खेले हैं नॉर्थ नवाब ने, 2 जीते हैं 1 हारा है। अलबत्ता कल पहली बार शिकस्त हुई थी गुलशन गौहर को। अच्छा कमबैक। वैसे अगर शॉट मिस हो जाए तो भी गुस्सा होता है हाफिज पोला का। इस दफा बैट जमीन में नहीं मारा लेकिन अपना हाथ बैट को जरूर मारा। शॉर्ट बॉल थी, जोन है ये हाफिज पोला का। पुल अच्छा करते हैं, इससे पहले इतनी ज्यादा शॉट थी नहीं, उसके बावजूद उसने 6 रन के लिए हिट किया था बॉल को। इस बार मिस करने पर काफी गुस्से में नजर आए। बहुत खूबसूरत शॉट ग्राउंड का अभी आपने देखा। थैंक यू प्रोडक्शन टीम। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन ही हासिल कर पाएंगे हाफिज पोला, लेकिन इस ओवर में जितने रन रिक्वायर्ड थे वो एटलीस्ट वो जरूर बोर्ड पर लाने में कामयाब हुए। बेहतरीन एंगल और बेहतरीन लेंथ है ये माज़ल्लाह के लिए। जिस पेस पे बॉल करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं बॉल को और बिल्कुल जड़ों में। तो इतना आसान नहीं है हाफिज पोला के लिए हाथ खोलना। फैमिलीज आ रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। देखिए ये फैमिली मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के किट पहने हुए बच्चे, तो जो फैमिलीज यहाँ पे अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी एकेडमी के बाद, वो भी UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार शफी आगा बड़ी हिट लगाने गए थे, बहुत अच्छी कॉल यहाँ पर। अगर ये रन लेने जाते तो शायद शफी आगा रन आउट हो जाते। दानिश, शफी आगा की बात की जाए तो इनका बल्ला अभी तक उस तरह रन उकलने में नाकाम रहा है जिस तरह दीगर बल्लेबाज हमें नजर आए हैं, और बड़े प्रोलिफिक हैं। आप देखें डायरेक्ट थ्रो, हाफिज पोला क्रीज में वापस आ चुके थे। क्लोज कॉल था वैसे ये। बहुत ही अच्छी कॉल यहाँ शफी आगा की, वापस भेजा हाफिज पोला को। एंजॉय करें यहाँ शायकीन क्रिकेट UBL अमीन के TPL को। इस बार जोरदार हिट और ये देखना होगा क्या बॉलर के पैर से या किसी। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पे। बिल्कुल पहली 2 गेंदों पर 10 रन कंसीड करने के बाद, बल्कि 2 गेंदों पर 12 रन कंसीड करने के बाद सिर्फ 13 रन। It's 7 p.m. आज की तकरीब के हवाले से मैं सबसे पहले तो एक मरतबा फिर बदर एक्सपो को, ज़ुहैर नसीर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमेशा की तरह आज फिर इन्होंने खूबसूरत इवेंट सजाया। मैं ज़ाती तौर पे बदर एक्सपो को कई दहाइयों से जानता हूं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है
और ख़ास तौर पर जो आज ये IEEE की जो एग्जीबिशन कर रहे हैं 12th, इसका मतलब है माशाल्लाह जिस तरह से हमने अभी प्रेजेंटेशन देखी ना, हमने ये प्रेजेंटेशन देखी कि आपने ये देखा होगा कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमारी तस्वीर भी आपको नजर आई उसके अंदर। तो इसका मकसद ये है कि हम बड़े पुराने एसोसिएट हैं बदर एक्सपो के साथ, और हमेशा से जो बदर एक्सपो के जितने इवेंट्स होते हैं हम हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं पूरी बदर एक्सपो की टीम को। वो ना सिर्फ IEEE बाकी जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो आइडियाज जो होती है एग्जीबिशन, जो पूरी रिलेटेड होती है आर्मी से और आर्म फोर्सेस से, मैं समझता हूं कि उससे बड़ी एग्जीबिशन पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। उसका सहरा भी ज़ुहैर नसीर साहब और बदर एक्सपो को जाता है, जिनके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के हवाले से IEEE के बगैर मैं समझता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी कि जो इन इक्विपमेंट्स के बगैर चल सकती हो। तो मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान की अगर तरक्की होनी है तो पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ा रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन अदा कर सकती है। अगर इंडस्ट्री होगी तो ये मुल्क चलेगा। आप ये देखें कि अगर हम माजी में जाकर देखते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की कब की। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की जब जनरल अयूब खान आए और उन्होंने इंडस्ट्री को फरोग दिया। आप ये देखें कि जब इंडस्ट्री को फरोग दिया तो पाकिस्तान ने तरक्की करना शुरू की और ग्रेजुअली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई। अब जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ सकते। तो इस वजह से हम तमाम दोस्तों को, हम जितने लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, हम सब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। और अगर इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे लेके जाना है तो उसको इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। जब आप इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो उसमें आप जितने प्रोफेशनल इस वक्त इस पंडाल में तशरीफ फरमा है, उस आप तमाम प्रोफेशनल की जरूरत होगी, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपकी तमाम इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आपके प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। तो मैं आज इस पंडाल से, इस तकरीब से ये फायदा उठाते हुए हुकूमत वक्त को ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जबकि वो 90 दिन के लिए आते हैं। लेकिन जो उनके इकदाम नजर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब जनरल अयूब ने मार्शाल्लाह लगाकर आए थे और इंडस्ट्री को इतना फरोग दिया, तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि आज इंटरिम गवर्नमेंट भी अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज बना ले कि वो इंडस्ट्री को फरोग दे, तो मेरे ख्याल से हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आज जो 300 रुपए से ऊपर जो डॉलर चला गया, हमारे पास कंट्रोल करने का वाहिद तरीका यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं ताकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ें। अगर हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे तो हमारे डॉलर को कंट्रोल मिलेगा, कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो मैं आज के आपके जितने यहाँ अहबाब बैठे हैं, यकीनन हाईली क्वालिफाइड लोग आज यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, क्योंकि ये आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये पढ़े लिखों की कॉन्फ्रेंस है। इस वजह से क्योंकि IEEE का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से कि 90% तो आप सारे इंजीनियर्स यहाँ तशरीफ फरमाएं इस पंडाल के अंदर। तो मैं आपको ये बताता चलूं अपना एक्सपीरियंस कि मैं जब आबाद का चेयरमैन था, तो मुझे आबाद के चेयरमैन होते हुए मेरी जो एक्सपो कराई और आबाद एक्सपो का जो ब्रांड बनाया, तो वो ब्रांड आबाद का बदर एक्सपो ने बनाया और ज़ुहैर नसीर साहब ने बनाया, जिसे हम आज तक याद करते हैं। क्योंकि आबाद का ताल्लुक, हमारी इंडस्ट्री का ताल्लुक आपसे रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास भी हम जितनी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चीजें आप लोगों से रिलेटेड लगती हैं। और अब तो दौर जो आ गया है नेट मीटरिंग का, सोलर पैनल्स का, तो यकीनन अब जिस हिसाब से आज के दौर में बिजली महंगी हो रही है और पूरे पाकिस्तान से लोग निकल चुके हैं बिजली के बिल ना अदा करने के लिए और बिजली के बिलों को आग लगाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि अब आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस पाकिस्तान के लिए, आप लोग ही अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं। क्यों कि बाकी तो आपको पता है नॉर्मल बिजली काबिल बर्दाश्त हो गई है, नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। अब अगर आप लोग फ्रंट फुट पर आके जिस तरह से अल्टरनेटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस न सिर्फ गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक को दें, ताकि जनरल पब्लिक के जो ये इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकें।
तो मेरी आज के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम प्रोफेशनल से भी ये दरख्वास्त होगी कि अब आप लोगों का रोल शुरू हुआ है, आप लोग आगे बढ़ें और आप गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये प्रॉब्लम कैसे हल किया जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से निकल सके। क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो आज कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि अगर वो कोई रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि वो यहां तक सर तक अपने कर्जों में डुबो चुके हैं अपने आप को, कि वो हर चीज IMF के पास जाते हैं पहले कि हमने 250 रुपए कम करने, आप इजाजत दे दें तो हम 250 रुपए कम कर दें। तो हमारा हाल इस वक्त एक्चुअली ये हो चुका है कि हम जब तक अपने लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता, मुझे जो अब नजर आ रहा है जिस अंदाज से लोग निकले हैं, खुदा ना खास्ता हम खाना जंगी की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि अगर लोग भूख से मरना शुरू होंगे, अपने बच्चों को मारना शुरू होंगे या खुदकुशियां करना शुरू होंगे, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के अंदर। तो लिहाजा हम सबको एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से गवर्नमेंट की मदद करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जिस तरह मैंने आबाद एक्सपो का तस्करा किया, अगर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का तस्करा ना करूं तो मैं समझता हूं कि वो बदर एक्सपो के साथ ज्यादती होगी। मैं जब आबाद में वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मैं ओहदेदार था, वो मेरा क्योंकि वो एक्सपीरियंस था आबाद एक्सपो का कि मैंने आबाद एक्सपो के शानदार अंदाज में की थी, और उसका यकीनन मेरे पीछे मेरी बैक पर बदर एक्सपो थी और ज़ुहैर नसीर थे, इस वजह से उसका सारा क्रेडिट मुझे मिला क्योंकि मैं चेयरमैन था। लेकिन असल जो ताकत थी, असल जो कोशिशें थी, वो सारी ज़ुहैर नसीर और इनकी बदर एक्सपो की टीम की थी। उसी को सामने रखते हुए जब मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में ओहदेदार था, वाइस प्रेसिडेंट था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने बदर एक्सपो के साथ दोबारा बात की कि क्यों ना हम पूरे दुनिया से लोगों को बुला के हम ऐसी को एग्जीबिशन करें, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। तो लिहाजा मुझे ज़ुहैर नसीर साहब ने जो आइडियाज मेरे साथ शेयर किए, आप यकीन करें कि इनकी काविशों से 22 ममालिक से हमने एग्जीबिटर्स बुलवाए और 22 ममालिक के एग्जीबिटर्स ने एक्सपो सेंटर के 6 के 6 हॉल, बल्कि हमें एक्स्ट्रा मार्कियां लगानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाब पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो फर्स्ट टाइम थी वो हमने की सिर्फ और सिर्फ किसकी काविशों से, बदर एक्सपो, ज़ुहैर नसीर और उनकी टीम की काविशों से, और वो कामयाब हुई। तो मैं ये बताता चलूं, अगर बदर एक्सपो किसी भी चीज का बेड़ा उठाती है तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब तो इंशाअल्लाह जरूर होना है। तो लिहाजा मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बताता चलूं कि आप लोगों की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अहम है, और खास तौर पर जो आजकल ये मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से तो और ज्यादा अहम है। तो लिहाजा आप लोग जितनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस 12th IEEE एक्सपो के अंदर, तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त होगी, मैंने भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर बदर एक्सपो इन हालात में ये एक्सपो करने जा रही है तो इंशाअल्लाह जिस तरह पहले 11 एक्सपोज कामयाब हुई हैं, ये 12वीं एक्सपो भी कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।